moments, self-doubt. How was it that first one? Luck by chance. Because I wanted to do it so badly. I developed another film, and I had a very big actor ask me to do a project for him. And it was a big star. The project was going to be a short hit. And everybody was like, a lot of people in my life were advising me to just take it. But it wasn't mine. It wasn't my film. It wasn't something... I know I could have done a good job, and I remember speaking to Meera Nair, who I worked with. You hadn't written it? No. I remember speaking to Meera Nair, who I worked with, and my brother. And they were the only two people. And Meera was like, what do you want to do? And I was like, I don't want to do it. And she was like, don't do it. You might have to sit for a bit, don't do it. And Farhan was like, don't do it if you don't want to do it. But saying no at that point, when you have no way of making your own story, you know, and I think that helped me in good stead. You know, so Luck by Chance happened very ironically because of these events. Yeah, because I said no to this, it dominoed into something, and my first film got made. When the film got made, nobody watched it. Nobody watched it. It made no money. Yeah. What? I got awards, and a lot of the press was amazing to the film. The critics were amazing, but nobody watched it. So yeah, that was tough. Yeah. Oh, so then, tell me about the Friday the film releases. How did you feel on Sunday? I did a check by Sunday. I was just happy my film released, and everybody was praising me. And I think by Wednesday I said, how's it doing? And that's when I was told, it's not doing well at all. And I was like, how can that be? But like, it's being reviewed and people are loving it. I mean, the certain section of people, but nobody watched it. They didn't understand it. They didn't get it. So then you're back to the drawing board and you start from scratch. Did it change your what you wanted to say? Did you now think, will people like it, will they not? Yeah, you do think for that. Zindagi. Yeah, I mean, but I'd already decided I wanted to do a road trip. But then you have to think about how you cast it. You have to think about, you know, it's going to open. It definitely, it gets more. Those dynamics kick in. They kick in. But it was a huge success. Zindagi, yeah. Many people say it was a movie that they've enjoyed. But it was also a dude movie. Yeah. It was fun. You know what I mean? Yeah, I don't know. I really don't know. Asking what would have happened if those three were women? Interesting. Thelma, Louise, and Louise. I don't know if it would have garnered that kind of. It was a dude movie. So then talk to me about the Wednesday after Zindagi. It was very, very, very nice. I'm sorry, but the sound of that ka-ching is very good when you make a film, because it didn't open that well. Because, you know, people didn't know what it was, and it wasn't bombastic in its publicity. So it opened like 8, 9, which for a Hrithik, Katrina starter wasn't. I've learned all this along the way. Wasn't really good, but then it just stayed, and it just kept making money and kept making money, and it was just amazing. And it relaxed you for DDD? Yeah. Because then you knew that you had a hit behind you. Yeah, I mean, you do feel a bit relaxed. I mean, I got very relaxed. I didn't work for a bit. You know, that was not good. I just traveled, but yeah, but it's the same. Every film is the same. You start from scratch, and then, you know, it's just film. साक्षी, बहुत मैंने भी सुना है, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि इसके बाद क्या। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। तुम्हारी ख्वाहिश क्या थी जब तुमने रेसलिंग शुरू किया था? क्या वो ख्वाहिश कंप्लीट हुई है? क्या वो ख्वाहिश की जगह पे एक और नया ख्वाहिश आया है? और अगर वो है तो वो क्या है? और उसको पहुंचने में तुम क्या करते? तो फर्स्ट रेसलिंग पे जब तुमने फर्स्ट स्टार्ट किया, पहली ख्वाहिश क्या क्या? जैसे मैंने बताया कि मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ओलंपिक्स क्या है, क्या कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता था कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। मैंने गेम शुरू किया और मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो हमारे सीनियर्स बताते थे कि इंडिया में फर्स्ट आओगे तो आप प्लेन में बैठ के दूसरी कंट्री में खेलने जाओगे। तो मुझे ये था कि मुझे अब तो प्लेन में बैठना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो हवा में उड़ता था और उसे देखते रहना कि कब मुझे मौका मिलेगा। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी कि अब तो मुझे हार्ड वर्क करना है, इंडिया में फर्स्ट आना और प्लेन में बैठना है। सिर्फ यही दिमाग में रहता था कि प्लेन में बैठना है। धीरे धीरे समझ हुई, जैसे जैसे मैं बाहर कॉम्पिटिशन्स खेलने गई और समझ
हुई कि एक ओलंपिक्स ऐसा लेवल है जो हर एथलीट का सपना होता है वहाँ तक पहुँचना। तो रेसलिंग से बहुत ज़्यादा लगाव होता चला गया और फिर ये था कि अब तो मुझे कुछ भी हो जाए ओलंपिक्स में जाना है। मुझे दिन रात सिर्फ मतलब रेसलिंग ही दिखती थी। मैं कभी शादीज में नहीं गई, मैं पार्टीज में जाए, मुझे ये नहीं पता कि वीकेंड कैसे एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ी। ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट होता था जाने में, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं होती क्योंकि मुझे सुबह शाम ट्रेनिंग और दिन में रेस्ट चाहिए होता था। बस फिर ओलंपिक्स हमेशा सपने में क्या हमेशा सोचते रहना कि मुझे, जैसे मैं फोटोज देखती थी, जैसे पहले हमारे जो रेसलर्स हैं सुशील पहलवान, जो योगेश्वर, उन्होंने ऐसे ओलंपिक्स में झंडा लहराया। तो हमेशा ये इमेजिन करना कि मैं भी ओलंपिक पोडियम पे हूँ और मैं फ्लैग लेके घूम रही हूँ। तो मेरा सपना था वो, और वो पूरा हो गया। रियो में पहले भी था पर मैं थोड़ा जूनियर थी, मैं नहीं जीत पाई, मैं 12 के ओलंपिक्स में नहीं जा पाई। लेकिन जब से रियो के था, दिन रात मुझे सिर्फ रियो रियो दिखता था। मैंने अपने रूम में भी एक टैग लगाया हुआ था कि रियो, कि मैं सो के उठती थी तो मुझे वही दिखता था, दिन में या रात सुबह मैं सो के उठती थी सिर्फ मुझे वही दिखता था। तो टारगेट तो ओलंपिक का था, वो पूरा हो गया। लेकिन वही बात है कि कभी मतलब ख्वाहिश, मतलब वो नहीं है कि वही तो सबर नहीं आता है। अब एक और शिखर पहुंचना एक और आता है, एक और शिखर पहुंचना। मुझे पता है वो क्या है। हाँ, वो सबको पता है वो क्या है। सबको पता है। और मैं एक बात तो शेयर करना चाहूंगी, जब रेसलिंग की समझ हुई तो सब बताते कि जापानीज कंट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब तो मेरे वेट में जो मेरी चैंपियन थी, तो सब बताते कि जापानीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो मेरे वेट की, वो 4 बार की लगातार ओलंपिक चैंपियन है। तो मैं भारत में जाने लगी और मुझे ये था कि मुझे वो उनको देखने का कब मौका मिलेगा, कि मैं उन स्टार्स को कब देख पाऊंगी। तो सडनली मैं कंपटीशन में गई और वहाँ वो ट्रेनिंग कर रही थी और मैं अपनी ट्रेनिंग छोड़ के सिर्फ उन्हें देखे जा रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मैं पागल हूँ उन्हें देखने के लिए कि मैं कब उससे मिल पाऊंगी, हाथ मिला पाऊंगी या फोटो। वही दिन है कि रियो में मैं उसके साथ पोडियम पे खड़ी हूँ। मतलब मैं भी सोचती हूँ वो सच्ची में पूरा हो गया। 2011 में मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, उससे देख रही हूँ, और फिर 16 में वो फर्स्ट पे खड़ी और मैं थर्ड मेडल आया। तो हम सेम पोडियम शेयर कर रहे हैं। तो मतलब अभी भी विश्वास नहीं था कई बार, मैं मतलब बैठ के सोचती हूँ। तो पूर्णा, you know the question. Selected for Everest. I want people to hear about your final ascent. Base camp, you were at base camp for 2-3 weeks, no? 5 days. No, but then you fell ill, you came back 5 days. And then you, so from the time that you decided camp 3 to final ascent, from that time to the ascent, I want people to hear the story. तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, लद्दाख ट्रेनिंग के लिए हम फर्स्ट टाइम फ्लाइट में गए थे। मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइट ट्रैवल लद्दाख को गए थे। आई थिंक दैट इंडिगो फ्लाइट होती। तो आई डोंट थिंक आई विल ट्रैवल इन फ्लाइट, जब तक मैंने ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं किया था। दार्जिलिंग को ट्रेन में गए थे, बट फ्लाइट में इट्स वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज फ्लाइंग ऑन फ्लाइट। एंड लैंड होना जा रही थी जब मैंने वॉमिटिंग कर लिया फर्स्ट टाइम, एंड इट्स वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। तो एवरेस्ट में इट वाज ट्रेनिंग इज डिफरेंट एंड एवरेस्ट एक्सपीडिशन इज डिफरेंट बिकॉज इट्स लाइक ट्रेनिंग ट्रैकिंग। तो मैंने डेथ के बारे में एंड एवलेंस आई डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट। एक ही है मेरे को, आई वांट टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ मी एंड हु आर वेटिंग फॉर माय सक्सेस, लाइक प्रवीण कुमार सर, पेरेंट्स, टीचर्स, एंड आई वांट टू प्रूव दैट गर्ल्स, लड़कियों कुछ भी कर सकती है, वो ही दिख रहा था मुझे। देन 5 दिन एवरेस्ट बेस कैंप को पहुंच गए एंड वी स्टेड 5 days फॉर acclimatization in the Everest base camp. तो 5 days के बाद we started trekking to up. एवरेस्ट बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप पर जा रहे थे, तो बहुत उल्टी हुआ था मुझे। I got vomitings
नहीं हुआ my body is not supported weather and high altitude and also I don't like that food also. I interested and I like Pakka South Indian food. So I got so much vomitings. Then Shekhar sir sent me back to again Everest Base Camp. First stayed 3 days for adjust cold weather. Then we stayed 3 days in again Everest Base Camp. And after 3 days again we started up and vomitings तो कम हो गए. मुझे एवरेस्ट ट्रेकिंग में एडवांस बेस कैंप से कैंप वन जाना बहुत टफ लगा क्योंकि इट्स वेरी स्टीप माउंटेन, स्टीप क्लाइंबिंग एडवांस बेस कैंप से कैंप वन के. तो एडवांस बेस कैंप 6,400 meters and camp one is 7,100 meters. It took 8 hours to reach camp one from advanced base camp for me. तो कैंप वन से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना. एक सिलेंडर 4 kgs रहता है. फॉर ईच वन 6 to 7 cylinders we have to use होता है. 6 to 7 cylinders. तो मेरा वेट से ज़्यादा वही वेट हो जाएगा कैरी करना. I carried 3 to 4 cylinders and extra clothing, equipment. Food also, like I don't like that food, but dry fruit, chocolates, I carried that all. So nearly 15 to 20 kgs I carried with me. So वहाँ से camp 3 is called death zone. ज़्यादा लोग उधर ही मर जाते हैं, dead होता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं एंड ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो जाते हैं, नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम है कि दे विल डाई. तो मैंने एवरेस्ट मार्च 24 आई रीच कैंप 3. वहाँ से अभी नाइट में डे टाइम को 3 o'clock वहाँ पहुँच गए. आफ्टर 3 o'clock कैंप 3 को पहुँच गया. वहाँ से अभी कंटिन्यू कर रहा था. वही नाइट में 9:30 को we have to start to summit the Mount Everest. It was last trekking, last night, last day. तो 9:30 को start हुआ था, night 9:30 and we are trekking continuously. Then midnight, what time I don't know actually, what time I don't know. थोड़ा चक्कर आई थी. Then I said with शेरपा सर मुझे बैठने के लिए मन कर रहा है. ऐसे नहीं बोला क्यों सर मुझे चक्कर आ रही है, ऐसे नहीं बोला क्योंकि जब मुझे वॉमिटिंग्स हुआ था ना, जब शेरपा ने बोला कि अगेन इफ यू गॉट वॉमिटिंग्स वी विल सेंड यू बैक टू हैदराबाद, दे सेड लाइक. देन मैंने उसको मन में रख के सर मुझे बैठने के लिए मन कर रहा है कि बोला. देन ही सेड वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है क्योंकि एक साइड पे माउंटेन्स है, वॉकिंग ट्रैकिंग करने के लिए जाना है, एक साइड पे वैलीज है. देन थोड़ा आगे जाके बैठेंगे. देन इट कंटिन्यू slowly I go up. Then we seated one place. Then वो चेक किया था मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन खत्म हो गया. The oxygen is finished.